बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। आज हम क्या करेंगे, आज हम अपनी साउंड के ऊपर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो टीचर्स एज ऑलवेज डे 1 का डे 2 का जितना कंटेंट है आपने वो सारा जब रिवाइज किया 20-25 मिनट लगा के एक्टिविटीज के साथ, फिर जब आपने उनको टास्क दिया किताब के सफे का, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ये साउंड और इसका फेस नहीं भूलेंगे। लेकिन some children at this very early age mix some sounds while pronouncing it and also mix some sounds while drawing the face of the sound. तो इस पे आपने परेशान नहीं होना, gradually they will learn and improve. So आज का किताब का सफा देखिए बच्चों, हमने क्या करना है, आज हमने करना है क्वाक की राइटिंग। सो राइटिंग के टास्क के लिए टीचर्स हमारे जो ELOs हैं, this says कि hold the tool properly, that means they should be able to hold a pencil now because we are almost done there, we are almost there to reach the finishing line. तो बच्चों अभी जरा स्क्रीन पे जैसे के साथ साथ मैं लिख रही हूं, आपने मुझे देखते जाना है और मेरी हाथ के मूवमेंट से आपने एयर में क्वाक की राइटिंग करनी है। सो हाउ डू वी राइट क्वाक? फर्स्ट वी गो राउंड, देन अप एंड देन डाउन। क्वाक 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 quack. Good, very, very good. If there is a library corner activity or teachers you have real objects, कोशिश करें कि फ्लैश कार्ड्स मुख्तलिफ रख दें और उसमें से बच्चों से कहें कि आपको पिक करके दिखाएं कि आज का जो साउंड है वो देखने में कैसा है, क्योंकि जो देखने में उनको समझ आएगा वही वो लिखेंगे जब आप उनको कहेंगे कि लिख के दिखाएं। सो प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड थ्रू डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स ऑफ द लेटर्स एंड अल्फाबेट्स इनसे कहें कि आज का जो साउंड का फेस है वो आपको निकाल के दिखाएं। Good. Now when children are doing these sort of activities, teachers तो इस साउंड के साथ साथ प्रीवियस साउंड्स भी उनके जहन में रिकॉल हो रही होती है, तो ये एक बैक ऑफ द माइंड अनकॉन्शियस रिकॉल एक्टिविटी भी चल रही होती है। तो बच्चों भी किताब पे आपको ये बड़ा सा क्वाक नजर आ रहा है येलो कलर का, इज इट ऑन योर पेज? यस। नाउ आई वांट यू ऑल टू होल्ड योर पेंसिल and then follow me through the direction of the arrow, going round and then up back to the arrow and then coming down and stop. This is the face that you just made for the sound quack. So teachers, this is not writing, this is tracing, and in fact for the young children it is drawing. जैसे वो एक happy face draw करते हैं, अपना goal eyes and then a smile, and if you ask them to draw a sad face, eyes and a sad face, this is the same way they draw the face of the sound they have been listening and practicing. You can also give them some straws or strings to make the face of the sound they are practicing. Once they do all of these different activities, for example writing on the sand tray or maybe writing in the air using their index finger, इससे उनकी fine motor के साथ साथ उनकी gross motor भी डेवलप हो रही है और उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी फॉर दिस साउंड इज आल्सो डेवलपिंग। सो टीचर्स, वंस यू गिव देम दिस part of the page to complete, make sure they're following the proper formation. They will go round first, then up and then down, and this is how they draw the face of the quack sound. So home task बच्चों आपने उसी इंस्ट्रक्शन पे फॉलो करना है, going round, then up and then down. It somewhat looks like a number 9, but it is English. This is the sound and the face of the sound quack. So teachers writing की worksheet available है. You can divide it into 2 tasks and give them 2 times in a week to complete it. So that is totally up to you. Task आपने achieve करना है that they hold the tools properly and are able to trace the sound they've been practicing for 2-3 days. So let's wrap it up. बच्चों अभी आपने क्या करना है जब आप प्लेग्राउंड में जाएंगे, so you're gonna walk and quack like a duck. Teachers, ये आप प्लेग्राउंड की एक्टिविटी करवा लीजिए, लेकिन आज हमने क्वाक की साउंड के तीनों लेसन्स को रैप अप किया है। दैट मीन्स दे नो ऑल द साउंड्स, द वोकैबुलरी वर्ड्स, दे कैन आल्सो रिकॉल द फेस ऑफ द साउंड, एंड ऑन any medium, if you give them a chalk, they can write it on the board. If you give them a marker, they can write it on the board. If you give them a piece of stick, they can write it on the sand. If you give them a sand tray, they can draw the face of the sound on the sand tray. So multiple mediums के through हमने listening, speaking, reading, writing को इन 3-4 दिनों में address किया. Make sure that you are practicing with the students
इन अ रूटीन वे, और आप पिछली तमाम साउंड्स को भी रेगुलरली रिवाइज कर रही हैं. सो टेक केयर प्लीज, कंटिन्यू विद द एक्टिविटीज. अल्लाह हाफिज.